Hello everyone, welcome to my channel कल की बातें. This is आशुतोष श्रीवास्तव and आज मैं हाइपोथेसिस और थ्योरी के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँगा. अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलता हूँ और वो साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है तो उसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, और अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलता हूँ तो और उसको ना ही प्रूव किया गया है कि वो सही है या प्रूव किया गया है कि वो गलत है तो उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ 17. मैं इस नंबर के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि मेरे जीवन में ये लकी नंबर है या अनलकी नंबर है. ये वो नंबर है जो कि मेरे जीवन में काफ़ी ज़्यादा आता रहता है और मैं इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता रहता हूँ. टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस प्रकार से है. I'm gonna share first of all the R&D thing and इंटरनेट क्या बोलता है 17 नंबर के बारे में. मोदी जी एंड गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा एंड कुछ चीज़ें अपने बारे में भी मेंशन करूंगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ R&D थिंग. ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो ये है 17 इज़ अ सिंबल ऑफ मैन participating in material world and spiritual world. Point number 2, it is a number of holy spirits. 3, number 17 represents the base theory of the balance. और फिर fourth point है 17 when written into Roman it becomes XVII, and when it is changed anagrammatically it turns into VIXI, which means I have lived. Which also means I am dead somewhere, and in Italian it is considered as my life is over. Point number 5, 17 is the only prime number which is sum of 4 consecutive numbers. 2 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 17. It is not much important. 6, atomic number of chlorine is 17. Group 17 of periodic table is called halogens. Not so important. Okay, next point. Computer game Half-Life 2 takes place in and around city 17. Next, the visual novel Ever 17, the Out of Infinity, strongly revolves around number 17. I thought to do some research on this, but I didn't get time. Okay, the next point is an American novelist, Stephen Burst, wrote a novel which revolves around the world of Dragara, which is an outer space planet. It is a fantasy world, and it's a planet, it's a place where 17 number is considered to be holy, and this writer uses either 17 chapters in his books, or he if the number of books are 2 or 3 or something like that, then the number of chapters are always in the multiples of 17, like 17, 34 and so on and so on. Okay, the next point, the Illuminatus trilogy, the symbol of Dicordianism. It is related with the goddess of chaos. It includes a pyramid with 17 steps because 17 has virtually no interesting geometric, arithmetic or mystical qualities. However, for the Illuminatis, 17 is tied with the 2317 phenomenon. This is also a topic I need to do more work upon. Next, in Harry Potter universe, at 17 years of age, the person becomes eligible to enter Hogwarts to become a wizard. 17 is the number of sickles in 1 gallon in the British wizards currency. Okay, now we'll move on to religion. According to Plutarch's text, the Egyptians have a legend that the end of Osiris's life came on the 17th of a month, on which day it is quite evident that the period of the full moon is over. Now, because of this, the Pythagoreans call this day the barrier and utterly abominate this number, which means they hate this number. They consider this number to be unlucky. Next point, in Yasna text Zoroastrianism, there are 17 chapters and which were written by Zoroaster, who was the founder, and his other names were Zarathustra, Zarathustra's Pitamaah, or Ashu Zarathustra. He was an ancient Iranian prophet, and what he wrote famously called Gathas, Gathas. Next point, in Islam, number of Raka'ahs that Muslim perform during Salat
or namaz on daily basis is 17. In Quran, the 17th chapter, the night journey, al-isra, is related somewhere with these similar points. कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगा. 10 commandments of God were given in 17 verses to the 20th chapter of the book of Exodus. Next point, Jesus traveled 17 years for his preparation before his public ministry. Okay, next point. Apostle, मतलब देवदूत James wrote his epistle मतलब letter. देवदूत James wrote his letter 17 years after the crucifixion. Torah, which literally means teaching or instructions or laws. Torah had 17 books initially, and now it has 5 books of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy, and are part of Bible and famously known as 5 books of Moses. Torah, Injil, Gospel, ये सब वो किताबें हैं जिनकी मदद ली गई थी just before the Bible was written. बाइबल से पहले जो ग्रंथ माने जाते थे वो इंजिल, गॉस्पेल, तोरा ये सब माने जाते थे. You can consider it like that. Next point. Some believe sky has 17 celestial layers. Next. According to a writer, all in the universe is governed by the number 17 and form of anything in this world is number 17. I don't know. I would say I don't think so. Maybe. Let's see. क्या पता मैं कुछ पता लगा पाऊँ. Okay. Next point, in sports, since start of 2014, F1 drivers were allowed to choose their own car number. However, following the fatal accident of Jules Bianchi, who drove number 17 was retired. And अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स भी दिखेंगे कि how 17 is somewhere related with death as well. Okay, moving on to the next point. MIT में काफ़ी सारे टेस्ट भी हुए हैं इस चीज़ के ऊपर जहाँ पर ये एक hence proved चीज़ है. 17 is the most common random number which anyone will choose if you are given to choose between numbers between 1 to 20. Okay, next point, the maximum number of strokes of a Chinese radical. चाइनीज़ मैं बताना चाहूँगा, चाइनीज़ में 3000 के आसपास अल्फ़ाबेट्स हैं. तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्ट्रोक्स पे डिपेंड करते हैं. स्ट्रोक्स अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं. मैंने एक बार पेन उठाया और चलाया तो उससे जो लाइन खींच सका, दैट्स कॉल्ड एन स्ट्रोक. एंड स्ट्रोक्स के हिसाब से अल्फ़ाबेट्स के मीनिंग और बाकी सब चीज़ें बदलती हैं. तो जो वर्ड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक्स यूज़ होते हैं दैट इज़ 17 नंबर. एंड द वर्ड इज़ फ्लूट. और कृष्ण भगवान का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था फ्लूट. आपको ये बात याद रखनी है. ओके, moving on to the next point, the number of syllables in a haiku kind of poetry is 5 plus 7 plus 5. That sums up to 17. Next point, in the Nordic countries, the 17th day of the year is considered the heart and or the back of winter. Next point, 17, also known as Loch 17, an unincorporated place in Clay Township, Ohio. Okay, next point, the fear of number 17 is called Heptadecaphobia or Heptakaidecaphobia. Okay, next point, 17 is the number to call police in France. Next point, the flight number of Malaysia, this one, इसको please ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ मज़ेदार है. The flight number of Malaysia Airlines flight 17, which was shot down on 17th July 2014, with the first test flight of plane is of 17th July 1997. Exactly 17 years difference is between them as well, and obviously the number of the flight was also 17. Next point, the record number of concerts performed in a single year at Madison Square Garden by the band Fish in 2017 was 17. Next point, Shakespeare wrote 17 comedies in 17th century. Next, age of universe is 10 to the power 17 seconds and counting. When we talk of things beyond earth, 17 is a frequently occurring number. I don't have much proof to prove this line, but I
read it on Wikipedia, so I'll consider it correct. Next, pi. Pi was the 17th letter of original Greek alphabets. Next, first atomic bomb prepared by 1700 persons was released on Hiroshima with 17 seconds of delay. ये वाला important है, इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. After 5 unsuccessful attempts, नाथूराम गोडसे shot गांधी जी dead. ठीक है, at 17th hour 17th minute. ठीक है, अब डेट की भी बात कर ली जाए. द डेट वॉज 30th of January 1948, and if I sum 3 plus 0 plus 1 plus 1 plus 9 plus 4 plus 8, it also sums up to 26, and 2 plus 6 is equal to 8, and 1 plus 7 is also is equal to 8. मतलब कहने का मतलब ये है, जो मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं 17 की बात कर रहा हूँ तो मैं 8 की भी बात कर रहा हूँ और 26 की भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज द सम इज़, मैं सम की बात कर रहा हूँ बेसिकली. लेकिन 17 पे ज़्यादा फोकस है मेरा. बाय गॉड से, सॉरी, नॉट, ही वॉज नॉट शॉट बाय गॉड, वो गॉड से शॉट किए गए थे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्थक्वेक्स. ये जो डेट है दैट इज़ 17th of January 1994 at California, and longitude latitude were 34 degree and minus 118 degrees. Second, 17th of January 1995 at Kobe in Japan, and the longitude latitude were 34 degree 135 degrees. and अगर longitude और latitude में भी थोड़ा हम लोग मैथ्स करें, so जो पहला नंबर है 34, it is the same and it is also the multiple of 17, and 118 and 135, अगर मैं इनको अगर जोड़ूं तो फिर मेरे को जो नंबर मिलेगा दैट इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली 17. पढ़ा था कहीं, सुना था कहीं, बहुत जगह यूज़ किया है. 17 पे खतरा. और एक चीज़ और, आई लव यू को अगर मैं तोड़ूं तो तोड़ूं क्या, अगर बस उनके लेटर्स देखूं तो जो नंबर्स हैं, आई इज़ अ सिंगल लेटर वर्ड, लव इज़ अ 4 letter वर्ड, एंड यू इज़ अ 3 letter वर्ड. अब अगर मैं लव यू को जोड़ दूं तो 1 और 7 मेरे को मिलता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट. और मैंने कहीं पर पढ़ा था, इंडिया में 17 लैंग्वेजेस बोली जाती थी इनिशियली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, और जब इंडिया का विभाजन हुआ था तो इनिशियली जो स्टेट्स थे वो भी 17 इन नंबर्स थे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. मोहम्मद गजनी रेडेड इंडिया 17 times between 1001 to 1024. He destroyed temples too. 17th loot was Shiva temple, सोमनाथ टेम्पल, एंड उसके बाद वो और कोई लूट कर नहीं पाया. दैट वॉज हिज लास्ट लूट. नेक्स्ट पॉइंट. शिवाजी became active. Shivaji became active when he was 17. Next, Bhishma Pitamaah Devvrat was the 8th son of Ganga who survived. Krishna was the 8th son who survived, and he was also the one who showed the true form of Vishnu, and he was also the 8th avatar of Vishnu. And a flute मत भूलिएगा, Chinese and the flute strokes. I guess बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं एंड बहुत कम चीज़ों को रिलेट कर पाया हूँ. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग. इस वीडियो को प्लीज़ बार बार देखें अगर आप वाकई में समझने चाहते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था. एंड हियर आई वुड लाइक टू साइन ऑफ. लव यू गाइस. बाय बाय.